Hello people, welcome to my channel All You Want. So here I'm back with another video on Geography Class 6 Chapter 5, that is Major Domains of the Earth. And yeah, if you like the video, do like, share and subscribe to my channel, and let's begin with the video. So the chapter begins with page number 30, and the first major term comes is lithosphere. What is a lithosphere? So it is basically the solid portion or the rocky portion or the uppermost layer on which we live, like the soil, the rocks, the stones, etc. Next come is the atmosphere. So the gaseous layer that's surround the earth is known as atmosphere. Atmosphere that means इसमें oxygen, carbon dioxide and other gases and जो air होती है that is a part of atmosphere. Next which comes is hydrosphere. As it says, hydro means water, so जो भी water body है that comes under hydrosphere, जो भी lakes, seas, oceans, rivers and everything, that is known as hydrosphere. And also जो भी water अलग अलग forms में भी होता है, जैसे कि snow, ice, rain and everything, वो भी hydrosphere में ही included होता है. Next term is biosphere. What is a biosphere? So, it is basically a very narrow zone in which land, water, and air all together meets. That means hydrosphere, atmosphere, and lithosphere का जो combination होगा, that is known as biosphere, because it biosphere means कि जो भी किसी भी लिविंग थिंग को रहने के लिए जो एकदम अप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड करता है दैट इज बायोस्फीयर. ये तीनों स्पेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है. ऑल्सो ये सारी टर्म्स जो हैं ग्रीक लैंग्वेज से अडॉप्ट की गई है, जिसमें कि लिथोस मीन्स स्टोन, एटमॉस मीन्स वेपर्स, ह्यूडर मीन्स वाटर एंड बायोस मीन्स लाइफ. सो इस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं हाउ वी हैव नेम्ड लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेजर हेडिंग विच इज़ अ लिथोस्फेयर. इसमें हम डीपली लिथोस्फेयर के बारे में जानेंगे. अब लिथोस्फेयर के दो मेन डिविजन्स होते हैं. वन इज कॉन्टिनेंट एंड द अदर इज ओशन बेसिन्स. सो जो कॉन्टिनेंट है दैट इज़ द लार्ज लैंड मास, जो कि बड़ा लैंड एरिया है, दैट इज़ कॉन्टिनेंट्स. एंड जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं दैट इज़ ओशन बेसिन्स. अब कमिंग टू द एलिवेशन, दैट मीन्स जो हाइट होगी, तो वो हम कैसे नापेंगे कि कौन सी माउंटेन कितनी ऊंची है या फिर कौन सा प्लेट्यू की हाइट कितनी है. सो वो कैसे नापते हैं? एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी. जो सी का लेवल है, सी का भी लेवल, दैट मीन्स जो सी के अंदर जो ग्राउंड होता है वहाँ से हम नापना शुरू करते हैं, विच इज़ टेकन एज ज़ीरो. And the highest mountain peak is Mount Everest, as we all know, and the height is 8848 meters above the sea level. अब जब हमने हाईएस्ट माउंटेन पीक जान ली है, नाउ वी नीड टू नो द ग्रेटेस्ट डेप्थ. सबसे ज़्यादा डेप्थ कहाँ पर है? दैट इज़ 11,022 meters, which is recorded at Mariana Trench इन द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन में एक मरियाना ट्रेंच है, वहाँ पर जो है सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज रिकॉर्डेड. सो ऑन दिस पेज वी हैव अ डू यू नो, जिसमें कि मैंशनड है अबाउट एडमंड हिलरी, जो कि न्यूजीलैंड से थे, एंड टेंजिंग नोर्गे शेरपा, जो कि इंडिया से थे. दे द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई 1953. एंड जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था वॉज ऑन 16 मई 1975, एंड हर नेम वॉज जुनको तबाई. दैट इज़ फ्रॉम शी वॉज फ्रॉम Japan. And the first Indian woman who climbed was Bichendri Pal, and she climbed on 23 May 1984. So the next main heading which comes in front of us is continents. So we have 7 continents. One is Asia, second Europe, third Africa, fourth North America, fifth South America, sixth Australia, and seventh is Antarctica. Coming back to the first one, which is Asia, it is the largest
continent and one third of the total land mass एरिया ऑफ द अर्थ जो वन थर्ड ऑफ द लैंड है वो एशिया ही कवर करता है. अब एशिया कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें इंडिया लोकेटेड है? वी कैन लर्न लाइक दिस. एंड ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जो है सिचुएटेड है. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहीं से पास होता है. एंड एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बिकॉज यूरोप भी एशिया से एकदम अटैच ही है. वो कैसे सेपरेटेड है? एक माउंटेन रेंज से. एंड विच नेम्स एंड इट्स नेम इज उराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट जो कि एशिया एंड यूरोप को जो है डिवाइड करता है. एंड ऑल्सो एशिया एंड यूरोप को एक कंबाइंड नेम भी दिया गया है दैट इज यूरेशिया. कमिंग टू द सेकेंड कॉन्टिनेंट विच इज यूरोप. And Europe lies in the west of Asia. For all these continents, इनकी location जाने के लिए you must have a like map so that you should have like a clear or I would say a rough location of all these oceans and the continents. अब जैसे एशिया से ईस्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है उसी तरह यूरोप से आर्कटिक सर्कल पास होता है. ऑल्सो जब आप मैप में देखेंगे देन यू विल नोटिस दैट यूरोप इज सराउंडेड फ्रॉम वाटर ऑन थ्री साइड्स. नाउ कमिंग टू द थर्ड विच इज अफ्रीका. एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. एंड अफ्रीका से इक्वेटर पास होता है दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड. एंड ऑल्सो दिस इज द ओनली एंड ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ से तीनों चीज़ें पास होती हैं दैट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नाउ इसकी स्पेशलिटी क्या है? दैट सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड्स हॉटेस्ट लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट है दैट इज लोकेटेड इन अफ्रीका. एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इज ऑल्सो लोकेटेड in Africa that is Nile River. Coming to the fourth continent which is North America. This is the third largest continent, okay? And because first one was Asia, second one was Africa, and the third one is North America. And it is also linked with South America with a very narrow strip of land. जैसे कि आप मैप में भी देखेंगे then you will notice that. And इसको क्या बोला जाता है? Isthmus of Panama. एंड इसकी लोकेशन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज़ नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो है नॉर्थ अमेरिका लाई करता है. एंड दिस इज सराउंडेड विथ थ्री ओशंस. कौन कौन से ओशंस? पैसिफिक, अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन. So the next continent is South America, as it suggests from the name that it lies in the southern hemisphere and three oceans cover it, that is Pacific, Atlantic and Southern Ocean. Also, the world's longest mountain range, that is Andes Mountains, lies in this South America. And world's largest river, that is Amazon River, also lies in South America. Also, do not get confused between the longest and the largest. Both the rivers are different. Now coming to the sixth continent, which is Australia, also which is the smallest continent, which entirely lies in the southern hemisphere. And also it entirely, like from all sides, lies in between the water, and this is the reason it is also known as an island continent. Now coming to the last continent, which is Antarctica. This also lies completely in the southern hemisphere, and also the South Pole lies almost in the center of this continent. Also, it is permanently covered with snow, and this is the reason it's always icy cold. And because of this reason, no permanent human settlement is here. And also, many countries have developed their research stations in Antarctica, and India का जो research station है, its name is Maitri and Dakshin Gangotri. Now we have a blue box on this page जिसमें कि एक difference दिया है between strait and isthmus. So strait is a landmass, we would say a very narrow passage जो कि दो water bodies को connect करता है, like एक ocean and एक sea को.
जैसे कि जो कि इंडिया एंड श्रीलंका को कनेक्ट करता है, उस स्ट्रेट का नेम भी पाल्क स्ट्रेट है, राइट। एंड कमिंग टू इस्थमस, जो कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को फॉर एग्जांपल कनेक्ट करता है, यानी कि दो लैंड बॉडीज को कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज इस्थमस। So next major heading we have is hydrosphere, and hydro means water, and जो earth का है हमारा, more than 71% of earth is covered with water, and this is why earth is known as a blue planet. अब उस 71% ऑफ वाटर जो कवर्ड लाइक जो कवर करता है अर्थ को, उसका भी 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन ओशंस, एंड जो कि it's very salty and not appropriate to use by the humans. And जो left over 3% है of water, it comes from ice sheets and glaciers and rivers, etc. And this is the reason that despite being a blue planet, जो कि and like 71% covered with water है, still we face shortage of water. So the next heading we have is oceans, जिसमें कि it says that ocean water is always moving, and इनकी three movements होती हैं. One is waves, second is tides, and third is ocean currents. Also, there are five major oceans. First one is Pacific Ocean, second is Atlantic Ocean, third is Indian Ocean, fourth is Southern Ocean, and fifth is Arctic Ocean. And all of them I have told is in the order of their sizes. Pacific Ocean, as I've said, is the largest ocean, and one third part जो है Pacific Ocean ही cover करता है Earth का. एंड मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पार्ट है ऑफ द अर्थ, ये पहले भी मैंने आपको बताया है, इन द पैसिफिक ओशन, एंड ऑलमोस्ट द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट इन अ सर्कुलर शेप. एंड जो कॉन्टिनेंट्स है जो पैसिफिक ओशन के अराउंड है, वो कौन कौन से हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. नेक्स्ट ओशन वी हैव according to size is Atlantic Ocean. It is the second largest ocean, and it is in S shape. एंड आप इसको मैप में भी देख सकते हैं. एंड इसके वेस्ट में है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, एंड इसके ईस्ट में है यूरोप एंड अफ्रीका. एंड जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की इज़ हाईली इंडेंटेड, दैट मीन्स जो कि बहुत ही इरेगुलर होती हैं जिगजैग शेप में, सो दैट इज़ नोन एज इंडेंटेड. एंड ये बहुत ही आइडियल लोकेशन है फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स बनाने के लिए, एंड दिस इज़ वाई इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन. Coming to the next ocean, which is Indian Ocean, and the shape of Indian Ocean is almost triangular, and you can again watch it in the world map. And इंडियन ओशन के नॉर्थ में है एशिया, वेस्ट में है अफ्रीका, एंड ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट ओशन विच इज सर्दर्न ओशन, एंड विच एनसर्कल्स एंटार्क्टिका, एंड जो है extends northward to 60 degrees south latitude. Coming to the last and the smallest ocean, which is the Arctic Ocean, and which is located within the Arctic Circle, and it surrounds the North Pole, and it is connected with the Pacific Ocean with a narrow stretch or a shallow water known as Bering Strait, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था what is a strait. तो उसी तरह जो आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, दैट इज बेरिंग स्ट्रेट, एंड इट इज सराउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. Next heading we have is atmosphere. So the earth is surrounded by layers of gases जिसको बोलते हैं atmosphere, and it is also known as that this is a thin blanket of air which is very very integral and very important aspect of the planet, because it provides us air to breathe, and also it protects us from the harmful effects of sun rays. एंड जो एटमॉस्फेयर है 1600 किलोमीटर्स तक जो है इसकी हाइट है, एंड ऑल्सो एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन एंड द टेम्परेचर.
So the first layer is troposphere, second is stratosphere, third is mesosphere, fourth is thermosphere, and fifth and the last one is exosphere. ये हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है. अब जो 99% ऑफ एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है एंड that is 78% nitrogen and 21% is oxygen and जो other gases हैं that is कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन एंड अदर जो गैसेस हैं वो 1% ऑफ द वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करते हैं. ऑल्सो जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो हाइट के साथ साथ डिक्रीज करती है एंड जो टेम्परेचर है वो भी हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा. इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर भी कम होता जाएगा एंड एयर की डेंसिटी भी कम होती जाएगी. Next term we have is wind. तो what is wind? Moving air is known as wind. इसकी बहुत simple definition थी. Next and last topic we have is biosphere, that is the domain of life. And this earth के पास जो biosphere होता है, this is why it is known as a unique planet. And बाकी biosphere में ही सब organisms like plant kingdom, animal kingdom exist करते हैं. And yeah, that's it for the video. Thank you so much end तक बने रहने के लिए and bye.